Dear viewers, you are welcome to another important class of function. Now, today I will teach you about function, very important chapter of mathematics. Though it is theoretical, but if you understand it well, then it will be very easy for you. So, real interesting chapter is the function. What is a function? We have already know about relation. हम relation पढ़ चुके हैं. अब देखेंगे what is function. Function क्या है? तो फंक्शन होने के लिए वो पहले रिलेशन होना चाहिए. जो फंक्शन होगा वो पहले रिलेशन होना चाहिए. दैट मीन्स इफ यू वांट टू से आर इज ए रिलेशन देन इट मे बी फंक्शन. सो जो फंक्शन होगा वो पहले रिलेशन होगा. और मैं पहले भी बता चुका हूँ जो रिलेशन है वो पहले सेट है. मीन्स सेट इज रिलेशन, रिलेशन विल बी फंक्शन. दैट मीन्स फंक्शन इज ए सेट. सो लाइक रिलेशन, रिलेशन जैसा फंक्शन भी सेट का अनदर फॉर्म है. ये एक दूसरा रूप है. तो रिलेशन एंड फंक्शन बोथ आर अदर फॉर्म्स ऑफ सेट्स. सो फंक्शन मीन्स it is a relation, but which relation will be function? What kind of relation will be a function? Under what condition? कौन कैसा कंडीशन सेटिस्फाई करने से एक रिलेशन फंक्शन होगा? अब दिखेंगे रिलेशन कैसे फंक्शन होता है. Look at here. I have given some example here. The first example, R1 is relation from x to y. Here A is related with 1, B is related with 2. Look at here. Here C has no associate element in y. Here क्या हुआ कि x का 2 एलिमेंट का एसोसिएट एलिमेंट है इन y, बट c का एसोसिएट एलिमेंट नहीं है. मैं पहले से बता देता हूँ a का एसोसिएट एलिमेंट 1 में है तो 1 को कहा जाता है 1 इज द इमेज ऑफ a. 1 इज द इमेज एंड a इज प्री इमेज ऑफ 1. एंड अगेन आई एम सेइंग इफ b हैज एसोसिएट एलिमेंट 2, इफ b इज रिलेटेड विथ 2 देन 2 इज इमेज ऑफ b. b का इमेज है 2 और b 2 का प्री इमेज है. ये है प्री इमेज, ये है इमेज. तो इधर क्या हुआ कि a एंड b हैज इमेजेस, a एंड b हैज एसोसिएट एलिमेंट्स इन y, बट c का कोई एसोसिएट एलिमेंट नहीं है. c का कोई रिलेशन नहीं है y के किसी भी एलिमेंट से. सो डियर स्टूडेंट्स, ये रिलेशन हो सकता है, फंक्शन नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? तो फंक्शन के लिए फर्स्ट कंडीशन ये है कि अगर रिलेशन x से निकला हुआ है, ये रिलेशन x से y तक गया है, दिस रिलेशन इज फ्रॉम x टू y, इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई द कंडीशन ऑफ फंक्शन. द फर्स्ट कंडीशन इज, पहला कंडीशन क्या है? जो x सेट है, x सेट का एवरी एलिमेंट का एसोसिएट एलिमेंट रहना चाहिए, जरूरी है. x सेट का एवरी एलिमेंट का एसोसिएट एलिमेंट इन y रहना जरूरी है. अगर हर एलिमेंट का एसोसिएट एलिमेंट y में नहीं रहेगा तो ये फंक्शन नहीं होगा, रिलेशन होगा, फंक्शन नहीं होगा. तो इधर क्या हुआ? x का सब एलिमेंट का, हर एलिमेंट का एसोसिएट एलिमेंट नहीं है. a का है 1, b का है 2, बट c का कोई एसोसिएट एलिमेंट नहीं है. इसलिए दिस इज रिलेशन बट नॉट ए फंक्शन. अनदर रिलेशन R2 इज हियर. लुक एट हियर. x का जो 2 एलिमेंट्स है a इज एसोसिएटेड विथ 1, b इज एसोसिएटेड विथ 2 एंड b इज एसोसिएटेड विथ 3. दैट मीन्स x का ईच एलिमेंट का एसोसिएट एलिमेंट है, कोई फांका नहीं है. तो मैंने बोला था x का कोई भी एलिमेंट फांका नहीं रहना चाहिए, हर एलिमेंट का इमेज होना चाहिए. इधर तो हर इमेज का इमेज है लेकिन ये फंक्शन नहीं है. क्यों नहीं है? क्या है कि एवरी ईच एलिमेंट का एसोसिएट एलिमेंट रहेगा लेकिन यूनिक एसोसिएट एलिमेंट, मतलब एक ही एसोसिएट एलिमेंट रहेगा. तो देखो a का एसोसिएट एलिमेंट 1 है, एक b का एसोसिएट एलिमेंट 2 है, b का एसोसिएट एलिमेंट 3 है. मतलब b इज रिलेटेड विथ 2 इमेजेस, b हैज 2 इमेजेस. दिस इज वन मैनी फंक्शन, बट वन मैनी फंक्शन, सॉरी, दिस इज वन मैनी रिलेशन, दिस इज वन मैनी रिलेशन. वन मैनी रिलेशंस आर नॉट फंक्शंस. कोई भी एलिमेंट का एक से ज़्यादा इमेज नहीं रहेगा. सो दिस इज ऑल्सो नॉट ए फंक्शन. इधर देखो R3 A1 B2 C2. हियर x का जो 3 एलिमेंट्स है A B C, ईच एलिमेंट का एसोसिएट एलिमेंट है. और कितना? सबका एक एक एसोसिएट एलिमेंट है. A का 1 है, B का भी 1 2 है, C का एक ही है 2. सबका एक एक है. A का एक है 1, B का भी एक है 2, C का भी एक है. तो
दिस इज फंक्शन। तो फंक्शन के लिए कंडीशन क्या, व्हिच रिलेशन विल बी फंक्शन, ए रिलेशन इज सेड टू बी फंक्शन इफ ईच एलिमेंट ऑफ x हैज ओनली वन एसोसिएटेड एलिमेंट इन y। ओनली टू वर्ड्स याद रखना, ईच यूनिक। These two words are very important to recognize a function। एक फंक्शन को पहचानने के लिए these two words are very important। Each unique, each means each element has unique associate element। each element का रहेगा, हर एक एलिमेंट का associate element रहेगा, और कितना यूनिक, एक एक। तो देखो इधर R4 इज रिलेशन A1 B3 C3 D3, ईच हर एक एलिमेंट का एसोसिएट एलिमेंट है कि नहीं, और कितना, सबका यूनिक एसोसिएट एलिमेंट, सबका एक एक होना चाहिए। देखो किसी का दो ठो है क्या, किसी का भी कोई भी एलिमेंट A B C D कोई भी एलिमेंट ले लो, इसमें कोई भी एलिमेंट का एक से ज़्यादा एसोसिएट एलिमेंट है क्या, सो दिस इज फंक्शन। बट इधर क्वेश्चन अराइजेस, इफ x का हर एक एलिमेंट का इमेज रहेगा तो y का हर एक एलिमेंट का प्री इमेज रहना जरूरी है क्या। याद रखिएगा, याद रखो, x का हर एक एलिमेंट का, ईच एलिमेंट का इमेज रहेगा, लेकिन y का हर एक एलिमेंट का प्री इमेज रहने से फंक्शन होगा, ना रहने से फंक्शन होगा। सेकंड इज x का हर एक एलिमेंट का यूनिक इमेज होता है, तो इधर जो एलिमेंट है y में, उसका क्या यूनिक प्री इमेज रहेगा, नहीं। ये जो एलिमेंट इधर है y का, इसका प्री इमेज एक और ज़्यादा रहने से भी फंक्शन होगा। सो ए फंक्शन मीन्स ए रिलेशन इज सेड टू बी फंक्शन इफ एवरी एलिमेंट हैज यूनिक एसोसिएट एलिमेंट। हर एवरी एलिमेंट हैज एसोसिएट एलिमेंट, एवरी एलिमेंट मस्ट हैव इमेज, बट एवरी एलिमेंट मे और मे नॉट हैव इमेज। एवरी एलिमेंट हैज यूनिक इमेज, एवरी एलिमेंट मे और मे नॉट हैव यूनिक एलिमेंट, may or may not have unique pre-images. So this is the condition of function. Now definition of function. Let f subset of x cross y. If f subset of x cross y, तो f is a relation from x to y, because relation means subset of a Cartesian product. So here f क्या है, एक Cartesian product का subset, तो f relation हो गया। यही relation, the relation f, ये जो relation हो गया f is said to be function। ये रिलेशन को हम फंक्शन कहेंगे फ्रॉम x टू y इफ, कौन सा कंडीशन, द कंडीशन इज ईच एलिमेंट ऑफ x हैज यूनिक एसोसिएट एलिमेंट इन y। x का ईच एलिमेंट, हर एक एलिमेंट का हैज मस्ट रहना चाहिए क्या, यूनिक एसोसिएट एलिमेंट इन y। x सेट का ईच एलिमेंट का एक ही एसोसिएट एलिमेंट y में रहना चाहिए। टू वर्ड्स ईच एंड यूनिक, ये दोनों याद रख, ये टू वर्ड्स याद रखने से फंक्शन का डेफिनेशन हो गया। तो ये जो डेफिनेशन हम अभी लिखे लैंग्वेज में, इसका मैथमेटिकल फॉर्म क्या है, हर ईच एलिमेंट का एसोसिएट एलिमेंट रहना चाहिए। तो फर्स्ट कंडीशन मैथमेटिकली, फॉर ईच x बिलोंग्स टू x देयर मस्ट बी y बिलोंग्स टू y। अगर x सेट का एक एलिमेंट है तो हर एक x का इमेज रहना चाहिए। तो फॉर एवरी x, दिस इज द सिंपल फॉर देयर एग्जिस्ट, हर एक x के लिए देयर एग्जिस्ट ए y इन y सेट वेयर x का रिलेशन किसके साथ है, y के साथ। दैट मीन्स x इज रिलेटेड विथ y सच दैट x इज रिलेटेड विथ y। फर्स्ट कंडीशन, x का हर एक एलिमेंट का y के साथ रिलेशन रहना चाहिए, दैट मीन्स हर एक एलिमेंट का एसोसिएट एलिमेंट है। सेकेंड कंडीशन क्या है, यूनिक, एवरी एलिमेंट का रहेगा, लेकिन यूनिक कैसे शो करेंगे, सपोज x का रिलेशन y साथ है, फिर x का रिलेशन z साथ है, तो x इज रिलेटेड विथ टू एलिमेंट्स y z, तो यूनिक एसोसिएट एलिमेंट हुआ क्या, कब होगा, इफ y इज इक्वल टू z। दैट मीन्स x इज रिलेटेड विथ y, x इज रिलेटेड विथ z, बट y इज इक्वल टू z, तो y z इक्वल हो गया तो x इज रिलेटेड विथ ओनली वन एलिमेंट। सो दिस टू कंडीशंस जो रिलेशन सेटिस्फाई करेगा, that relation will be known as function. Now examples, the first is the f1 is a relation from x to y. Look at here, every element of x set a b c has associate element in y, and every element has unique associate element. A is related with 1, b with 2, c with 2. Every element has unique associate element. So each element has image and each element has unique image, so this is function. Look at here, every element of x has relation, but every element of y are not related, still then function. And here f2,
Look at here, A, B, C, three elements. All elements of X are related. Each element has image and each element has unique image. So this is function. But here, look at here, 4 has no preimage, still then function. F is a function from X to Y because A is related with 1, B with 3, C with 3. That means each element of X has a unique image. हर एक का एक ही इमेज है. So this is function. Each element का image होना चाहिए और unique image होना चाहिए. So this is a function. But look at here, 2 has no preimage, 4 has no preimage. That means here every element of X has a relation, but every element of Y is not related. Still then function होगा. And X का हर एलिमेंट का इमेज होना चाहिए, Y का हर एक एलिमेंट का इमेज ना होने से फंक्शन होगा. X का हर एलिमेंट का यूनिक इमेज होगा, लेकिन इसका जिस ये Y सेट का जो एलिमेंट का प्री इमेज है, एक से ज़्यादा प्री इमेज रहने से फंक्शन होगा. सो दिस इज द कंडीशन ऑफ फंक्शन. सो देयर आर डिफरेंट नेम्स ऑफ फंक्शन. फंक्शन, मैप, मैपिंग, करस्पॉन्डेंस, दीज आर सिनोनिम्स. फंक्शन का ये सब अलग अलग नाम होता है. लेट एफ बी ए फंक्शन फ्रॉम एक्स टू वाई. सपोज एफ एक फंक्शन है एक्स टू वाई एंड इट कैन बी रिटन इन सिम्बोलिकली as f is a function from x to y. f is, इसको हम क्या पढ़ेंगे, f is a function from x to y और f is a function from x to y. ऐसे लिखते हैं सिम्बोलिकली. Look at here, f is a function from x to y. This is x set, this is y set. f is function from x to y. Suppose x belongs to x. X is an element of x. Y is an element of y. If f is a function from x to y, if f is a function from x to y, then x is related with y. x सेट का हर एक एलिमेंट का इमेज होना चाहिए. सपोज x का इमेज y है. इफ x इज इमेज ऑफ y, देन वी से हम क्या कहते हैं, y इज इमेज ऑफ x. इमेज ऑफ x मीन्स f इमेज ऑफ x और वैल्यू ऑफ f, वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x. और इसको कैसे लिखते हैं, y इज इक्वल टू f ऑफ x. सो x का इमेज है y और y का प्री इमेज है x. And if f is a function from x to y, then we write f of x means f of x set का element is equal to y set का element. f of x is equal to y. So here y is equal to f of x. The very important thing is, if f is a function, the very important thing is, if f is a function from x to y, then every element of x is related with some elements of y. That means here हर एक एलिमेंट x का एवरी एलिमेंट का इमेज होगा. तो हर एक एलिमेंट का इमेज होगा मीन्स ये जो सेट है इसको कहते हैं डोमेन सेट. एंड दिस सेट y इज नोन एज कोडोमेन. ये जो y सेट है इसको कहते हैं कोडोमेन. बट लुक एट हियर, y सेट का हर एलिमेंट का प्री इमेज होता है, नहीं भी होता है. तो सपोज y सेट का हर एक एलिमेंट का प्री इमेज नहीं है, मैं इधर कर देता हूँ. इसी के अंदर जो एलिमेंट्स है तो उस एलिमेंट्स का प्री इमेज है. सपोज हियर आर सम एलिमेंट्स which has प्री इमेजेस एंड इफ इट हैज प्री इमेजेस, देन सपोज y is here, y1 is here. y1 is not image of any element. इधर जो एलिमेंट देखो, लुक एट हियर, 2 का कोई प्री इमेज है क्या, 1 का प्री इमेज है, 3 का प्री इमेज है, लेकिन 2 का कोई प्री इमेज है क्या. सपोज इसके अंदर जो एलिमेंट्स है हर एक एलिमेंट का प्री इमेज है, इधर जो है इसका प्री इमेज नहीं है. तो हियर इज 1 मीन्स दिस इज इमेज ऑफ ए. तो हम इसको 1 को क्या लिखेंगे, एफ इमेज, एफ ऑफ ए, वैल्यू ऑफ फंक्शन एट ए. दिस इज 3 एंड दिस 3 इज image of 3 means f of this 3 is image of b means f of b, and this is also image of c and this can also be written as f of c. But these two is not f image. That means 1 and 3, these two elements can be expressed in form of f of x, but these 2 and 4 are not f of x. So the elements within this are f of x, can be expressed in form of f of x, can be expressed in form of f of x, but these elements can't be, these elements y1 cannot be expressed as a function of any element of x. So look at here,
these elements has pre-images but these element has no pre-image. So the elements of y set का उस एलिमेंट लेंगे जो एलिमेंट का प्री-इमेज है and the elements which has pre-images is known as range set because these elements can be expressed as image of some elements. ये जो है these are the image of X set. So if this is the image of X set, so every element का image है, that means every element means X. So this is your f of X set. That means if here is x1, f of x1, x2. Look at here. In this example, I will describe details. So this is a domain set, this is codomain set, and the images, the set of images which has pre-image. उस एलिमेंट का सेट जिस the set of elements which has pre-images is known as a range set. So this is also known as f of x, and here x is known as this y is known as image and this x is known as pre-image. Another important thing is domain range. Let f is a function from x to y, then the domain of f is denoted by df is equal to x, the entire set. I have already said in relation chapter, relation में details बोला था. Domain means the set of elements of first set. The set of elements of first set. First set से जो elements relation में part लिए होंगे, the elements which are related, the elements of first set which has images, the elements of first set which has images, they form the domain. So domain means the set of elements of first set which has image. But here क्या होता है कि एक सेट का जिस एलिमेंट का इमेज होगा, एक सेट का जिस एलिमेंट का इमेज होगा, वही एलिमेंट का सेट को हम डोमेन कहेंगे. लेकिन what happens here, every element is related, every element has image. So the set of every element is the domain set. That means the entire set is the domain set because every element is related. Every element of x is related. So this entire set is a domain. In case of function, if f is a function from x to y, the entire set x is the domain. So the domain of the function is x. The range of f is ry, which is the set of y belongs to y. That means range is the set of, here domain is the set of elements of x set. Range is the set of elements of y set. But domain is the set of all elements of x because all elements has images. But range is the set of elements of y, but every element of y has not pre-images. So the range is the set of elements of y which has pre-images. y सेट का जो एलिमेंट का प्री-इमेज है वही एलिमेंट का सेट को हम क्या कहते हैं, रेंज सेट. If one has pre-image, then one can be written as f of a. That means 3 is also f of b, f of c. That means the elements which has pre-images can be expressed as f of x. So the elements of y which can be expressed as f of x, y belongs to y such that y is equal to f of x for x belongs to x. So the elements of y which can be expressed as f of x is known as, the set of these elements is known as range set. So x belongs to x means every element has image. So f of x का set means the set is f of entire set x. Look at your example. In this example, here f is a function from x to y. In this example, the domain is the सेट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एक्स. एक्स का वही एलिमेंट जिसका इमेजेस है, तो एक्स का हर एक एलिमेंट का तो इमेज है ना. तो हियर डोमेन इज ए बी सी मीन्स द एंटायर सेट. इन ए फंक्शन रिलेशन में क्या होता है कि डोमेन
एक सेट हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन फंक्शन में डोमेन मीन्स द फर्स्ट सेट, एंटायर सेट, एंड रेंज मीन्स the set of elements of y which has pre-images which are expressed in form of f of x. Look at here, किस किस का प्रीमेज है, 1 का है, 3 का है, 2 और 4 का प्रीमेज है क्या, तो रेंज में कौन कौन रहेंगे, 1 और 3, 1 और 3। अच्छा मुझे और एक बात बताओ, दिस 1 3 हियर 1 वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, 1 is f of a and this 3 is f of b and this is f of c. So look at here, this set is the function of every element of x, that means this is f of x, f of x. So this is the range set. Another thing is here domain is x set, codomain is y set, domain is x set, codomain is y set, and the range is we get 1 3. Look at here, 1 3 is range but codomain is y set. So look at here, रेंज सेट का एवरी एलिमेंट 1 3 y सेट में है कि नहीं, तो बड़ा सेट कौन सा है, y सेट। तो नोट याद रखो, रेंज ऑफ ए सेट, range of a function always subset of a codomain. रेंज का एवरी एलिमेंट कोडोमेन में रहता है, और ए फंक्शन व्हेयर रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन. I have taken some examples here. Y is equal to f of x, as you have already learned in the previous classes. Y is equal to f of x, function of x is equal to 2x square plus 3x minus 5. Here there are two variables, x is the independent variable, y is the dependent variable. Because if we choose x, suppose we take x is equal to 1, so y is equal to, this is 2 plus 3 5 minus 5 0. If we take x equal to 2, then we find another value of 2. So value of y depends upon value of x. So we can choose independently the value of x, but the value of y depends upon the value of x. So that's why here x is the independent variable, y is the dependent variable. In a function there are two variables, one is x, another is y. X is the independent variable, y is the dependent variable. Another function y is equal to f of x, which is equal to x plus sin x, and another function s is equal to ut plus half at square. You have already learned in the laws of motions, and here s, the displacement, is the function of t. S is function of t, s time का function है. Here t is the independent variable and s is the dependent variable.